video, we will study about sebaceous cyst. So first of all, what is sebaceous cyst? So sebaceous cyst is a retention cyst in relation to sebaceous gland due to the blockage of the sebaceous duct and accumulation of secretion within the gland. तो एक gland होता है, वहां से एक duct होता है, एक gland होता है, एक duct होता है. If this duct gets blocked, then the secretions of this gland will retain in this gland itself and that will form a cyst. Okay. So second question is कि sebaceous cyst कहाँ पे पाया जाता है? So usually it can occur anywhere in the body, but they're usually produced or found in the sweat producing areas. Okay. Sebaceous cyst epidermis में है, dermis में है कि कहाँ पे है? So sebaceous glands are located in the dermis, right? And their ducts open either into hair follicle or directly onto the skin. So sebaceous cysts are present in the skin itself. As I told you, anywhere in the body, but usually sweat forming areas. तो देखा हमने मिलता है स्कैल्प में, फेस में, नेक में, स्क्रोटम में, चेस्ट में, ब्रेस्ट में एंड शोल्डर रीजन में. सो आपने जान लिया कि sebaceous cyst क्या होता है, sebaceous cyst कैसे फॉर्म होता है, कहाँ पे आपको देखने मिलेगा. नाउ यू हैव टू नो कि पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा. ऑब्वियसली द पेशेंट विल से दैट देयर इज अ स्वेलिंग. अब जैसे स्वेलिंग को डिस्क्राइब करते हो, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, कैसे साइज चेंज हुआ इसका, एनी पेन एसोसिएटेड विद स्वेलिंग और नॉट, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द स्वेलिंग और नॉट, ये सब पूछोगे. तो यूजुअली कोई पेन नहीं होता है. येस, देयर इज ओकेजनल डिस्चार्ज ऑफ ग्रेइश व्हाइट मटेरियल फ्रॉम द स्वेलिंग व्हिच मे हैव एन ऑफेंसिव स्मेल. तो आप एक हिस्ट्री ले लोगे तो पेशेंट बेसिकली एक स्वेलिंग कंप्लेन करेगा. पेन यूजुअली नहीं होता है, डिस्चार्ज हो सकता है. एज अ डॉक्टर व्हाट विल यू सी? एज अ डॉक्टर यू विल सी दैट द शेप ऑफ द स्वेलिंग व्हिच इज अ ग्लोबुलर शेप. आप उसका साइट देखोगे, आपको कंफर्म करना है कि sebaceous cyst है या नहीं. तो sebaceous cyst कंफर्म करने के लिए हम लोग देखते हैं कि punctum है या नहीं. Then there is a punctum. In sebaceous cyst there is always a punctum on the surface of the swelling. First point. Second point, translumination negative होगा. Fluctuation usually small cyst होता है तो negative रहता है, लेकिन बड़ा cyst होने से fluctuation is positive. And very important thing that sebaceous cyst is fixed to the skin because sebaceous cyst आता ही तुम्हारे skin से है, epidermis layer से आता है, so it is fixed to the skin. If you haven't seen the video of dermoid, you can go and see that. Dermoid cyst मैंने बोला था कभी भी स्किन से फिक्स नहीं होता because dermoid subcutaneous टिश्यू से आता है, इससे कभी भी फिक्स नहीं होता. लेकिन sebaceous cyst स्किन से फिक्स होता है. Right? Now, how will you treat the patient? So basically, you will have to do routine blood investigations, especially if you do the blood sugar estimation if the patient is elderly, and you have to go for the excision of the cyst under local anesthesia. और ये local anesthesia कौन सा यूज करते हो? 1% lignocaine hydrochloride यूज करते हैं, and this is given using a ring block technique. ठीक है, 1% lignocaine hydrochloride given using a ring block technique. Next point, excision of the cyst को छोड़ के is there any other method? Yes, the cyst can also be excised by incision and avulsion. Here also local anesthesia is given to the skin and then you can do incision and avulsion instead of excision. Now, content क्या होता है sebaceous cyst का and can it get infected? So the content of the sebaceous cyst is a greyish white cheesy material with an unpleasant smell. Dermoid cyst का content क्या था? It is the toothpaste like material which is formed from the desquamated epithelial cells, but this is greyish white cheesy material with an unpleasant smell. Yes, sebaceous cyst can get infected also.